नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, एक ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन आया अभी एक दो दिन पहले ही, जिसमें कहा गया है कि जो नॉन एग्रीकल्चर हिमाचली है वो हिमाचल में लैंड नहीं ले सकते हैं। और जो वो प्रोविजन है एक्ट में, तो वो एक बिल्कुल उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया है कि बिल्कुल प्रॉपर बना है। उसमें रीजनिंग भी प्रॉपर दी गई है, जैसे वैलिड रीजन की जो वो प्रोविजन बना है। और ये जो जजमेंट है बहुत ही वैल्यूएबल जजमेंट है इस पॉइंट पे, और ये सबके काम आने वाली है। तो आप काइंडली इसको जो है अपना लिंक अपना सेव कर लें। नहीं तो मैंने प्ले लिस्ट अब बना दी हुई है लगभग सब्जेक्ट वाइज, तो आपके लिए एक तरह से वो डाइजेस्ट का काम करती है। मैं आपको उसके पेपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है पहले, आप उस वीडियो में देख लें। नहीं तो मैं दोबारा भी आप लोगों को उसके बारे में एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो बना के मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो यूजफुल है। विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट आपके लिए हर एक चीज़ जो है रेडली अवेलेबल है। और वो प्लेलिस्ट जो है टॉपिक वाइज बनाई है, आप काइंडली टेक ए लुक इनटू दैट। उसमें कोई और भी टॉपिक ऐड करने हैं, और वो टॉपिक में जैसे कोई नई वीडियो आती है तो ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट होती चल आई एम सॉरी। तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधा उस जजमेंट की तरफ कि क्या है वो डिसीजन। तो ये जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये जो इसमें फैक्ट्स है, both these appeals before this court are by the plaintiff who had filed a suit for specific performance, which was dismissed, and later his first appeal before the High Court was dismissed on the grounds of delay. इसमें इनफैक्ट दो इश्यूज इन्वॉल्व है। एक तो इशू है कि डिले वाला है, उसके ऊपर जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन दिए, और एक इशू जो है वो नॉन एग्रीकल्चर हिमाचली के बारे में दो इशू इसमें डिसाइड हुए हैं। तो जो ये फर्स्ट पार्ट में है वो इशू है लिमिटेशन से रिलेटेड है। We may state here that the plaintiff appellant was not a party to the contract of which a specific performance was sought. The contract was executed between the defendant and a company called Messrs Himalayan Ski Village Private Limited, which was for sale of an agricultural land in Himachal Pradesh. There were two plots of the land for which two different agreements of sale were executed, and hence two civil suits were filed. अब ये जो लिमिटेशन वाला इशू यहाँ पे डील हुआ है इस पैराग्राफ में, इन बोथ द अबव पीस देयर इज ए कॉमन चैलेंज अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड 17/12/2018 passed by the single judge of the High Court of Himachal Pradesh in so and so so and so. The impugned order dismisses the delay condonation application filed under section 5 of the Limitation Act 1963, declining to condone a delay of 254 days because the reasons assigned for the condonation were not sufficient reasons for condonation of delay. The appellant herein had earlier filed two suits for specific performance which were dismissed by the district judge Kullu, wide order dated so and so. फिर जो है इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील टू बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में पैरा 5 में डील हुआ है। What we have here is a pure civil matter. An appeal has to be filed within a stipulated period prescribed under the law. Belated appeals can only be condoned when sufficient reason is shown before the court for the delay. The appellant who seeks condonation of delay therefore must explain the delay of each day. It is true that the courts should not be pedantic in their approach while condoning the delay, and explanation of each day's delay should not be taken literally, but the fact remains that there must be reasonable explanation for the delay. In the present case, this delay has not been explained to the satisfaction of the court. The only reason assigned by the appellant for the delay of 254 days in filing the first appeal was that he was not having sufficient funds to pay the court fee. This was not found to be sufficient reason for the condonation of delay, as the appellant was an affluent businessman and a hotelier. In any case, even it is presumed for the sake of argument that the appellant was short of funds at the relevant point of time and was not able to pay court fee. Nothing barred him from filing the appeal, as there is a provision under the law for filing a defective appeal. An appeal which is deficient as far as court fee is concerned, provided the court fee is paid within the time limit given by the court. We would refer to section 149 of the CPC.
जो फिर ये यहाँ सेक्शन 149 ऑफ सीपीसी का जो है यहाँ पे हवाला दिया गया है बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, जो इस तरह से है और आप लोगों के नॉलेज के लिए आप इसमें देख लीजिए। इसके बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट ने it would have been entirely a different matter had the appellant filed an appeal in terms of the section 149 CPC and thereafter removed the defects by paying deficit court fees. This was evidently not been done. तो ये जो है इसमें एक रीजन था। फिर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने therefore we are of the considered opinion that the high court did not commit any mistake in dismissing the delay कंडोनेशन एप्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट अपेलेंट। ये तो एक इसमें जो एक इशू था लिमिटेशन का वो यहां तक डील हो गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें ऑन मेरिट जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने था वो था दिस कोर्ट इवन ऑन मेरिट्स वी डू नॉट फाइंड इट ए केस विच कॉज फॉर आवर इंटरफेरेंस। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट वन मेसर्स हिमालयन ski village private limited had entered into an agreement for sale with the agriculturist landowner of the Himachal Pradesh for sale of his agricultural land. Now the admitted position in the state of Himachal Pradesh is that under section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act 1972, only an agriculturist, which is defined under section 22 of the 1972 Act, can purchase the land in Himachal Pradesh, which would mean a landowner who personally cultivates his land in Himachal Pradesh. If a non-agriculturist has to purchase a land, it can only be done with the prior permission of the state government under section 118 of the Act. Messrs. Himalayan Ski Village was a private company which was admittedly not an agriculturist and therefore was not capable of under the law to purchase the land in Himachal Pradesh, and therefore it was a condition of the agreement to sale that the defendant would secure the necessary approval from the government within a stipulated period of time. The admitted position is that this approval was not given to the defendant by the state government, and then the defendant assigned his right to the plaintiff, who thereafter filed the suit for specific performance. तो इसके बाद जो है ये सेक्शन 118 है हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 का, जिसके प्रोविजंस ये आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और आप अगर चाहें इसको पढ़ना तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूं एक बारी। फिर जो है पैरा 12 में ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन आई है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की। The admitted position is that Messrs. Himalayan Ski Village Private Limited failed to get permission from the state government under section 118 of the 1972 Act. फिर इससे रिलेटेड फैक्ट जो है पैरा 13 में what was done instead was that when the purchaser failed to get the requisite permission from the state government under section 118 of the 1972 Act, it assigned its rights to the plaintiff, that is the present appellant before the court, sorry, and the plaintiff in turn filed a suit for specific performance against the defendants, that is Surinder Singh, defendant number 1, who is respondent number 1 herein. It was only after that he also implemented Messrs. Himalayan Ski Village Private Limited, defendant 2, who is the respondent number 2 herein. फिर जो है इस एक्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पैरा 17 में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत ही स्टीक जो है ऑब्जर्वेशन की है। वो है वी मे हेयर एड दैट द होल पर्पस ऑफ सेक्शन 118 ऑफ द 1972 एक्ट इज टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चरिस्ट विद स्मॉल बिल्डिंग्स holdings. Land in Himachal Pradesh cannot be transferred to a non-agriculturist, and this is with a purpose. The purpose is to save the small agriculturist holding of poor person and also to check the rampant conversion of agricultural land for non-agricultural purposes. A person who is not an agriculturist can only purchase land in Himachal Pradesh with the permission of the state government. The government is expected to examine from a case-to-case basis whether such permission can be given or not. In the present case, it's thought it best not to grant such a permission.
However, the purpose of the transfer remains the same, which is a non-agricultural activity. By merely assigning rights to an agriculturist who will be using the land for a purpose other than agriculture would defeat the purpose of this act. फिर जो है यहाँ पे एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की ही जजमेंट का हवाला दिया और अल्टीमेटली द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वी डू नॉट फाइंड एनी स्कोप फॉर इंटरफेरेंस इन द मैटर, कॉन्सिक्वेंटली बोथ द अपील स्टैंड डिसमिस। यानी कि ये एक जो है प्रिलिमिनरी जो एक पॉइंट था, जो लीगल क्वेश्चन था, वो था लिमिटेशन का, दूसरा था सेक्शन 118 का ऑन मेरिट। तो ये बोथ अकाउंट जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसको जो है डिसमिस किया केस को। और ये कौन सा केस है, मैं ले चलता हूँ आपको। ये है एक सिविल अपील थी जो अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी है। केस का टाइटल है अजय डाबरा वर्सेस प्यारे राम। और ये जो जजमेंट है ये जो है ऑनरेबल जस्टिस पमिदिगंतम श्री नरसिम्हा एंड ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया की है। और ये 31 जनवरी 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। तो ये जजमेंट आप लोगों के काफी काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे मुझे कि और किस पॉइंट पे जजमेंट बनानी चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं एडवोकेट लोकेंद्र ठाकुर जी का, जिन्होंने ये जजमेंट मुझे दी है। और थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।